गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल मैं और फ्रैंक लिकीर आया और मेरे पूरे के पूरे गोप्रो के बैटरीज कंप्लीट ख़त्म थे। तो ये है हमारा तहस नहस वाला रूम एंड वी आर इन लिकीर बट द ट्रेडिशनल लद्दाखी architecture and painting and the way it is. This place is called Old Likir Homestay और यहाँ पे you can see blue sheep का horn and it's a traditional house, एकदम मज़ेदार। तो अभी फ्रैंक गया हुआ है ब्रेकफास्ट करने के लिए। आई थॉट ब्लॉग तो मैंने किया नहीं, तो मैंने अभी ब्लॉग चालू कर लिया। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। फ्रैंक, Yo, did you have your chai? not yet. I'm having it. You left me and you are having a chai. Yeah, because where were you? Like you always doing things, doing. I don't know. Me, I'm here. I'm with the people. You're busy with internet. I'm not busy with internet, but this story has to be remembered. True, totally. So here, this is actually the living area what usually a Ladakhi house has. Okay? और ये भाई है My name is Tanzin Taspa ओले and I'm from Likir. I run farm stay here farm stay. since 2004. Okay, what are the experiences you give? Experience you can have a especially you can have a Ladakhi food. You Okay. can taste the authentic Ladakhi food here. ठीक. And what else? Yeah, you can see the different. I try to keep my house As traditional as possible. as possible. ये जो ये पत्थर की है, हाँ जी, हाँ जी। ये पत्थर का है। पत्थर से बनाते हैं एंड ये एक्चुअली तुर्तुक में बनता है। हाँ, तुर्तुक में फेमस है। मेरे को ये एक चीज़ है, आई हैड मेट हिम। ये जो दो बंदे थे जो बनाने वाले, एक बंदा तो मर गया, पता नहीं दूसरा बंदा है या नहीं, बट ये वही लोग बनाते थे, वही फैमिली बनाती थी, वही फेमस है। सेरामिक का बात कर रहे तो पूरा लिकिर से फेमस है, सेरामिक का बात कर रहे तो। एंड दिस विलेज यू कैन ऑल्सो कम ओवर हियर एंड लर्न पॉटरी। पर अभी फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं। और ये लिकिर गांव यूज्ड टू बी पोटरी विलेज ना। बचपन में ये गांव पोटरी विलेज मनाया जाता था। सभी पोटरी था। सब मोनेस्ट्री के बारे में, मोनेस्ट्री गेलुपा फाउंडर का है। तो उस वक्त तिब्बत से स्पेशलाइज वो आर्टिस्ट के यहाँ पे ट्रेन किया गया था। वो राजा का ऑर्डर था ना, लिकिर वाला पूरा पोर्ट बनाएगा और बसगो वाला वो कुछ डांग कलेक्ट करेगा, कोई वो कलेक्ट करेगा फायरिंग के लिए। अच्छा, वो उसका ऑर्डर था ना। वो नीचे ही वो पोटरी हाउस आपने देखा? हाँ, मैं वहाँ पे अभी जाएंगे। वही लाइफ है अभी तक, यंगर जनरेशन वही लाइफ है। मतलब अभी थोड़ा ग्रो हो रहा है, बीच में पूरा वो हो गया ना, खत्म हो गया था कोविड की वजह से। नहीं, वो मतलब ट्रेडिशन ही खत्म हो रहा था। ट्रेडिशन ही खत्म हो गया था। तो अभी वो एक ही बंदा है जो पॉट था। अभी थोड़ा बढ़ रहा है, ऊपर लेडीज लोग कर रहा है, अभी थोड़ा अच्छा हो रहा है, वापस आ रहा है। सही। So, Frank, tell me your experience till now. The camera is all yours. Till now, since we arrived here, Since the time we have come, and first of all, you have not introduced yourself to my audience. true. So You can take it. I'm Frank. I come from France. Frank from France. Correct. And I've been wandering around the world like since 20 years something. Okay. I've been in many places like Australia, New Zealand, Korea, Japan, a lot of countries around Europe. And I'm trying to go in as many countries as I can and meet the people as they used to live and as they still live, like in some places. And so we started our journey From Srinagar. from Srinagar, like 6 days ago? Not 6 days. Five? Five. 5 days ago. And yeah, I met a lot of different type of people, a lot of different culture, languages, Traditions. and I think here today in Likir, it's the most traditional place I've been so far, because everything is like Hotels. where we've been, it was like, okay, we went to guest house and there was like nice places like the Black Sheep place we went yesterday. But here it's like so traditional, and even the house, it's like Then Umar's house.
In Kashmir? Yeah, Umar house was like really nice, and Umar was like so helpful and like so Sweet. such a nice guy, seriously. And but yeah, here is like the real traditional one, and there is spirit here, like, you know what I mean? There is like aura and spirit. yeah, definitely. And now it's breakfast time. Yeah, and they're super hungry. I'm hungry as usual. I'm always hungry anyway. And by the way, Frank works for the Paris Dakar. अभी टाइम बज गया है 12:48 एंड रूम सब कुछ चेक कर लिया, नहा लिया, चिल मार लिया और अभी टाइम है निकलने का. आई मिस दिस प्लेस. वी विश वी हैड सम मोर टाइम. ये भाई को निकलने का नहीं था, देन आई वुड हैव स्टेड ओवर हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम. और ड्रोन उड़ाने का था, वो DJI ऐप काम ही नहीं कर रहा. ये वाला व्यू देखो भाई, वो पहाड़, वहाँ पे बर्फबारी हो रही है. तो हम लोग भी पैकिंग वैकिंग करके आ गए भाई माया के पास. ऑल सेट? ओह, 1 second, I'll see you. You want to go first? Okay. Okay. स्टार्टिंग ये अपना इंडोरो हो गया. यहाँ पे क्या है कि ढलाई में स्पीड नहीं आना है, एंड आई हैव टू टेक अ अपहिल टर्न विथ लगेज बिहाइंड. थोड़ा सा वो पीछे से शेक कर देता है. तो अभी हम लोग मोनास्ट्री के पास जाएंगे, मोनास्ट्री थोड़ा बहुत देखेंगे, उसके बाद वहाँ से हम लोग निकलेंगे ससपोल के साइड वापस. ओके, ये क्या हुआ? ससपोल के साइड हम लोग निकलेंगे, ससपोल के साइड 16 किलोमीटर पीछे ससपोल केव्स देखेंगे. ससपोल केव्स देख के देन विल गो टू आलची. व्हाट अ ब्यूटीफुल monastery, man.